This is the form. By default form selected है, form की properties आ रही, ठीक है? Form की properties आ रही है. You can change the name of the form. You can change the background color of the form. Okay. This is your name. Text property of the form. Form 1 आ रहा है. This is the text that will be displayed in the title bar of the form. Suppose here I change the text property of the form. जैसे हम controls की चेंज करते हैं तो कंट्रोल्स के ऊपर आपके वो नेम्स लिखे नजर आते हैं, टेक्स्ट लिखा नजर आता है. सेम वे वी आर हैविंग द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म आल्सो. इफ आई चेंज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म, suppose this is a calculator. I'm going to make a calculator. Now this calculator will be displayed in the title bar of the form. ठीक है? Similarly, we can also change the name of the form. Form 1. Name means the name which will be used in coding to identify it. Okay. Since we are having the back color property, we can change the background color of the form using this color or any other color, web colors or system colors or custom colors, whatever color you want, you can have the color. ठीक है? Background colors of the form, back color property. Okay, after that I'm going to place the controls. View menu. हमारे पास अभी टूल बॉक्स नजर नहीं आ रहा है. I'm going to set it. This is the toolbox. I'm going to place a label. आपकी बुक्स में एक बेटा दिया हुआ है कैलकुलेटर. मैं बुक्स नहीं लेके आया मुझे. आपकी बुक्स में पेज नंबर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन चेक इट. In your books, page number 94, mathematical calculations. We are going to create 2 text boxes, 4 buttons for addition, subtraction, multiplication, and division. Now, 4 text boxes. Oh, sorry, 3 text boxes, 4 buttons for calculation. Create a label. This label, change its text property. Change its text property to display the text that you want to display. I'm displaying it here. Mathematical calculation. बनाओ साथ साथ. ठीक है? This is. Then I'm going to have more labels here. I need more labels. I'm double clicking on it and creating the labels. Now, label 2. टूल बॉक्स नहीं मिल रहा. कलर पहले एक बार सारे क्रिएट कर लो, देन सेलेक्ट ऑल. इकट्ठे सेलेक्ट करके सबका कलर एक ही बार में चेंज कर लेना. एक एक करके करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है? चेंज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लेबल 2. फर्स्ट नंबर, देन चेंज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लेबल 3. Second number, then change the text property of label 4, result. ठीक है? Then we can have 3 text boxes. I'm double clicking. 3 text boxes. Okay. Then you can have the buttons. Students who had joined with the computer or laptop, they can make this application side by side. Okay, change the text property of button 1, addition. Then button 2, text property, subtraction. And button 3, multiplication. Then button 4, division.
Now I'm going to have two more buttons for clear and exit. Clear button will clear all the values from the text boxes and exit button will end the program. Clear and exit. Okay? Place all the controls properly. हाँ जी, rhythm हो गए. Part से controls place करो. Then select the multiple controls. You can select the multiple controls by pressing the shift key and then you can change its font. Click on the font property. Name नहीं change करना, text change करो अभी. Space दिया, dot दिया. बिगनिंग में स्पेस तो नहीं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में तो इनवैलिड नहीं आना चाहिए, नेम में इनवैलिड आ सकता है. हाँ जी, चेंज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी. यू कैन चेंज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी. टूल बॉक्स लेफ्ट हैंड साइड पे, नहीं तो विंडोज मेन्यू में जाके रीसेट ऑल विंडोज. देन सेलेक्ट द मल्टीपल labels, all the labels by selecting the, press the shift key. विंडोज मेन्यू में जाओ, अनिक ऊपर जाओ विंडोज मेन्यू में. ठीक है, रीसेट विंडोज लेआउट. अब आ गया. टूल बॉक्स पे करो. टूल बॉक्स में किया है खाली आए टूल. देयर आर नो यूजर कंट्रोल्स इन द ग्रुप. जस्ट कर लेंगे. शिफ्ट की के साथ आप मल्टीपल कंट्रोल सेलेक्ट कर सकते हो. Then you can place them. You can change the property, a font property and background property, back color property. Format your form. After that, we are going to do the coding. विंडोज मेन्यू में दोबारा क्लिक करो. रीसेट विंडोज. हाँ जी, और अभी तक देखिए ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स में आके बैठे हुए हो, काम को खत्म करना. हमारे भी देखिए 3 बने लेबल. टेक्स्ट बॉक्सेस पे डबल क्लिक करो, क्यों नहीं बन रहे हैं. अबे नहीं, ट्रैक करके भेज ही करने हैं ना. हाँ जी, आपके हो गए. वेरी गुड. 2 बटन और. हाँ जी, आप दोनों को बेटा अलग अलग क्यों नहीं कर रहे हो. हाँ जी, कंट्रोल जल्दी बटन बनाओ, कोडिंग करनी है. हमारा घंटा क्यों नहीं हो रही. What do you mean by that? मैंने पहले ही बोला, अगर काम करना है तो सीरियसली करना है. हाँ, लेबल्स नहीं मिल रहे हैं.
बैक कलर प्रॉपर्टी हो गया। ये लेबल देखो, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करो, लिखो मैथमेटिकल कैलकुलेटर ऊपर, जो फर्स्ट ऊपर लेबल आ रहा है। हाँ जी, नाउ क्लिक ऑन, डबल क्लिक ऑन फर्स्ट बटन, जो एडिशन बटन आ रहा है आपका, डबल क्लिक ऑन एडिशन बटन। नाउ यू विल गेट द कोडिंग। नाउ दिस इज द कोडिंग। कोडिंग करते वक्त सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका बटन जो बटन नेम और इवेंट नेम करेक्ट आ रहा है। चेक करो मनीष, प्राइवेट सब बटन 1 क्लिक, ठीक है, प्राइवेट सब बटन 1 क्लिक। Under this name and under this event, you will do the coding. First coding, addition के लिए क्या लिखोगे बताओ? Yes, anyone online students, क्या लिखोगे यहाँ पे coding? What coding you will write for addition of the two numbers given in the text box 1 and text box 2? Yes, Manasvi, what will you write to do the addition of two numbers from the two text boxes? What will you write? Yes, Tushar, बोलो। टेक्स्ट बॉक्स 2 आपको डिस्प्ले करवाना है टेक्स्ट बॉक्स 3 में रिजल्ट एडिशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2। मैम टेक्स्ट बॉक्स 3 is equals to val text box 1 plus val text box 2. ओके, वेरी गुड। टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट प्रॉपर्टी चाहिए, यू आर चेंजिंग द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। Yes. Text box 3 dot text equals to value of text box 1 dot text plus val of text box 2 dot text. This will do the addition without using variables. अभी हम variables use नहीं कर रहे हैं, सिंपल text box 3 dot text, यानी text box 3 में जो text value आएगी वो क्या आएगी? Value of text box 1 dot text plus value of text box 2 dot text. ठीक है, this is for addition. Similar coding for subtraction, division and multiplication. Similar coding for subtraction, division and multiplication. Just double click on subtraction button. It will do open the coding, private sub button 2 click. Now check करके coding किस बटन पे हो रही है, किस कंट्रोल पे हो रही है और किस इवेंट पे हो रही है. You will write text box 3 dot text equals to val of text box 1 minus text box 2. Just change the symbol. Val of text box 2 dot text. क्या नहीं आ रहा? सिस्टम चेंज कर। Similarly, copy the coding in the third button. For multiplication, change the symbol multiply. Then double click on division button and copy the coding and change the symbol to division. चेक करो जल्दी से कोडिंग, अब भी होगी। एक कर लो, बाकी कॉपी करो। हाँ जी मनमीत, हो गया? कोडिंग हो गई? अरमान जल्दी जल्दी डबल क्लिक करना है, पहले सब्ट्रैक्शन बटन पे डबल क्लिक करो, कोडिंग का इवेंट खुलेगा, ओपन होगा, देन कॉपी द कोडिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड चेंज द सिंबल। हाँ जी, एनीबॉडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू डूइंग द साइड बाय साइड? जो कर रहे हो कंप्यूटर पे कर रहे हो साथ में? अगर कर रहे हो तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन इन द क्लास। यस मैम। अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो मुझे।
कंट्रोल नेम, इवेंट नेम, लेबल से अपने लेबल में क्लिक करो, is equal to var of text box 1 plus var of text box 2. हमारे कंट्रोल्स कहाँ है? काम ना करने के ना सारे एक्सक्यूजेस है। देखो कोडिंग दिखाओ, हो गया? रन करके देखो। कंसिडर var के बाद ब्रैकेट है, var is a function name, ब्रैकेट है, value of text box 1 दे रहा है। Var is a function. Function will what this function will do? It will convert the value of text box into number so that the calculation can be done. Text box 3 or text. हाँ जी रन करके देखो, रन हो गया। यस अवधि रन हो गया। अरमान चेक करो रन करके। क्लिक ऑन द debug start debugging button. Enter the values in two text boxes. Click on addition. See it will do the addition. Display the sum of two numbers. Subtraction पे click कर रहे हैं, minus, multiplication and division. It is displaying all the answers. Now I want कि जो result वाला text box है, it should not be enabled. मैं भी इस पे क्लिक करके कुछ टाइप कर सकती हूँ, but I should not be, user should not be able to type anything in the third text box. What should I do? What should I do? Huh? Enable property. What should I do? I will change the enable property in the design time to false. Okay? Go to the stop debugging. Go to the design. Okay? Click on free third text box. I should not be able to type anything in the result. It should display the value only. So I am going to change enabled property to false. Okay? I will change the enabled property from the properties toolbar, properties bar to the false. Clear? रन करके देखो, चेक करो। नाउ यू आर नॉट एबल टू क्लिक इन द थर्ड टेक्स्ट बॉक्स। आप इस पे सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हो, आप इस पे क्लिक करके उस पे कुछ टाइप नहीं कर सकते हो। क्लिक ऑन एडिशन, इट विल ऐड द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. It is displaying all the answers. Now what should be done on the clear button? If I click on clear button, it should clear the values from these text boxes. Erase the values from these text boxes. क्या करना चाहिए? What should I do? Anyone online? क्या करना चाहिए अगर मुझे सारे बटन्स के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को क्लियर करना है, इरेज करना है? बिल्कुल सिंपल है। क्लियर बटन पे डबल क्लिक करो। क्लियर बटन की कोडिंग ओपन हो रही है। प्राइवेट सब बटन 5 अंडरस्कोर क्लिक, राइट? Text box 1 dot text is equal to opening double quotes, closing double quotes. It will erase the value. Text property क्या हो गई? Blank. Text property कहाँ सेट कर दी हमने? Blank. किसमें नहीं कुछ हो रहा? पहले स्टॉप करो, डिबगिंग स्टॉप करो पहले। आपका रन मोड में होगा। ऊपर चेक करो, टूल बार पे स्टॉप बटन हाईलाइट हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा।
text box 2 dot text equals to opening closing double quotes. Again, text box 3 dot text equals to opening closing double quotes. It will clear the values from all the three text boxes. Enter the values. Then click on clear. See, when I click on clear button, all the values change. अपनी लेबर प्रॉपर्टी फॉल्स करिए टेक्स्ट बॉक्स के नेम करेक्ट है नहीं है ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है ये आपका टेक्स्ट बॉक्स 2 है और ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है बेटा यानी आपका टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू या इसको ऊपर ले जाओ ठीक है ना ये ऊपर आएगा ये यहाँ नीचे आएगा अब हाँ जी ठीक हो गया हाँ जी ये आपका देखो एंड क्लास के बाहर आ रहा है एंड क्लास में बाहर कर रहा है हाँ जी हाँ जी हो गया क्लियर बटन की कोडिंग करो clear button की कोडिंग करो all the three text boxes equals to double quote text box 1 dot text equals to double quote opening closing one is the text box 1 हाँ जी हो गया सिंपल कोडिंग देख लो आपके सामने आ रहा है हाँ जी बेटा क्या नहीं Manasvi, had you done? Cheshta, Ritesh,
अमरजोत, नवकरण, चाहत, किसी ने प्रोग्राम बनाया साथ साथ ऑनलाइन अपना सिस्टम पे अगर बनाया तो यू कैन शेयर इट. If you want to share it, you can raise your hand. If you want to share your program, Somil, Pragati, if you want to share your program in the class, you can raise your hand. I will allow you to share your screen. Hanji. Similarly, if you want to do the same program with using variables, so how will you do it? वेरिएबल्स कैसे यूज करते हैं? इंटीजर. आपको पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कराने हैं, देन यू विल स्टोर द वैल्यूज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्सेस इन वेरिएबल्स, देन डू द कैलकुलेशन. इंटीजर इज अ डाटा टाइप. इंटीजर इज अ डाटा टाइप. ठीक है, इंटीजर इज अ डाटा टाइप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिक्लेयर द वेरिएबल्स, then you will use the copy the transfer the values as a is equal to val of text box 1 dot text, then add a plus b. Okay, okay, tomorrow we will do the same program with variables and other programs also using if then. Okay, in the class.